Exercise 5.2 question number 4. The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following question. First part of the question is, in which subject did the student score 105 marks? So यहाँ पर हम सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे. सबसे पहले उसमें टेबल में शो करेंगे सब्जेक्ट, फिर सेंट्रल एंगल, फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड, आउट ऑफ 540. सो सब्जेक्ट इज, हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से. सेंट्रल एंगल फॉर मैथमेटिक्स इज 90 डिग्री. So marks in different subject and their central angle. One more column we will make here is fraction. 90 upon 360. Total central angle is 360, so it is 1 upon 4. 55 upon 360 is equal to. So हमने सभी के फ्रैक्शंस ऑब्टेन कर लिए. अब हम मार्क्स फाइंड करेंगे आउट ऑफ 540. सो 1 upon 4 of 540 is equal to 135. 11 upon 72 multiplied by 540, 82.5. For 7 upon 36 multiplied by 540, central angle is 105. For 2 upon 9 multiplied by 540, answer is 120. And 13 upon 72 multiplied by 540, answer is 97.5. Now we have to solve. In which subject the student got 105 marks? Scored 105. It is, answer is Hindi. So answer of first part is Hindi. In second part, how many more marks were obtained by the student in mathematics than Hindi? So marks in Hindi is 105 and marks in mathematics is 135. The difference 135 minus 105, answer is 30. In third part, examine whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics. Social science plus mathematics is equal to, social science is 97.5 and mathematics is 135. Answer is 232.5. And science and Hindi. Science plus Hindi. Science is 120 and Hindi is 105. Total marks is 225. So question is, examine whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than in science and Hindi. So answer is yes. आप सिर्फ इनका सेंट्रल एंगल को भी प्लस करके पता कर सकते हैं, क्योंकि साइंस और हिंदी का सेंट्रल एंगल यदि हम देखेंगे तो 70 + 80 दैट इज 150 डिग्री, और मैथमेटिक्स और सोशल साइंस का जो सेंट्रल एंगल होगा 90 + 60 करके यदि आप इसको करेंगे 65 करके तो ये 155 डिग्री आएगा. तो इस तरीके से आप डायरेक्ट या तो मार्क्स को सम कर लीजिए या सेंट्रल एंगल के बेसिस पे भी आप इसे पता लगा सकते हैं.